Hello, I am Subir Ranjan. Welcome to my channel. Indian consumer electronics and smartphone manufacturer Micromax has announced massive plans for dethroning Chinese smartphone manufacturers of their present hegemonic control of the Indian market. Sharing his company's future plans, Micromax co-founder Rahul Sharma unveiled the new in-range of smartphones which are projected as an offering by the Indian company to take off Xiaomi, Vivo, Redmi, Oppo, among others. Micromax fortunes have taken a severe hit over the past 4 years, from being India's number 2 smartphone manufacturer in 2016 to now being completely run over by Chinese brands. In a moving video message, Rahul Sharma invoked Prime Minister's Atmanirbhar Bharat. Here's the video. शुरू करें। नमस्कार, मेरा नाम राहुल शर्मा है। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ। पापा एक सरकारी स्कूल में टीचर थे और दिल्ली की उन गलियों में कभी एक सपना देखा था कि राहुल कुछ बड़ा करना है। अच्छा, मुझे याद है कि उन दिनों बड़ी झिझक के साथ मैंने पापा से 3 लाख रुपए उधार मांगे। घर में सबसे छोटा था तो पापा ने दे भी दिए और 3 और दोस्तों के साथ मिलकर माइक्रोमैक्स की शुरुआत करी। आप सब लोगों ने देखते ही देखते माइक्रोमैक्स को देश का नंबर 1 और वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट ब्रांड बना दिया। अच्छा, कुछ गलतियां भी हुई हमसे, पर पहली बार कर रहे थे, काम भी कर रहे थे और सीख भी रहे थे। पर फिर एक ऐसा वक्त आया जब चाइनीज मोबाइल वालों ने मुझे मेरे देश में ही पछाड़ दिया। हारा तो तब भी नहीं था, बस लगा कि हो गया राहुल, कर लिया है हासिल तूने जो कुछ भी करना था अपने परिवार के लिए, अपने लिए। पर बॉर्डर पे जो हुआ ना, वो ठीक नहीं हुआ। आपने फिर आवाज दी माइक्रोमैक्स को और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर भारत का ऐलान कर दिया। बहुत सोचा कि क्या करूं, क्यों करूं, किसके लिए। मुझे लगता है जिंदगी ने एक बार फिर वही लाकर खड़ा कर दिया जहां से सब शुरू किया था। पर इस बार जो कुछ भी करूंगा तो सिर्फ इंडिया के लिए। माइक्रोमैक्स वापस आ रहा है लेकर इन इंडिया। And ladies and gentlemen, if you are visiting my channel for the first time, please do subscribe my channel and press the bell icon. Let's start. A new report today claims the In series will include 2 models to start with, or 3 depending on how you look at it. One powered by the Helio G85 chipset and other, or more like the other 2, by the Helio G35. They will be priced between INR 7,000, that is $95 or 80 euros, and 15,000, that is $2,000 and 175 euros. There's no info about the G85 model, but there is some about the G35 one. It will run stock Android, pack a 5000 mAh battery and have 2 memory configurations, 2GB 32GB and 3GB 32GB. However, both variants will have different camera combinations, and that's where the confusion about the number of models stem from. Are the 2 the same model if they have different cameras? The 2GB RAM model will have a total of 3 cameras on board, an 8 megapixel selfie shooter on the front with a 13 megapixel primary camera on the back, joined by a 2 megapixel unit. The 3GB RAM variant, on the other hand, will feature a total of 4 cameras, a 13 megapixel camera on the front and a triple camera setup on the back consisting of 13 megapixel, 5 megapixel and 2 megapixel modules. The name of this In series smartphones are not yet known, and Micromax hasn't yet revealed when they are going to launch. But the source claims that they are going to launch in the first week of November. So ladies and gentlemen, this was all about the Indian make, or precisely Make in India smartphone to battle with Chinese manufacturing company. And ladies and gentlemen, if you are visiting my channel for the first time, please do subscribe my channel and press the bell icon such that whatever the latest leaked information I am revealing through my YouTube channel will get updated to you at the earliest. Catch you again with another episode of Inside Stories. Till then, stay safe, stay tuned. This is Subir. Sign off.